Jadi beliau katakan, hadirin yang dimuliakan Allah, dengan kita keluar jalan Allah, bicara iman, mendengarkan iman, hidup dalam iman, iman kita meningkat sampai dia keluar 4 bulan jalan Allah, sehingga ibadahnya pun mulai bagus. 5 waktu dia sholat, dia berzikir, dia baca Al-Quran dan sebagainya. Tapi beliau katakan ini sering yang terjadi kesalahan dalam kehidupan kita ini, bahwasanya kalau sudah keluar 4 bulan, ibadah pun sudah mulai kerjakan, bahkan dia sudah haji umrah, alhamdulillah saya sudah mengamalkan agama dalam kehidupan, dia sudah merasa cukup, sampai di sana mulai stop dia. Jadi iman yang dia dapatkan dengan 4 bulan tadi atau keluar 40 hari membuat dia ibadah rajin, semangat, lantas dia berhenti. Dia katakan, alhamdulillah saya sudah keluar 4 bulan, saya sudah kartu lama, alhamdulillah saya sudah beribadah, bahkan sudah haji dan umrah. Hadirin subhanahu wa ta'ala, agama tidak hanya sampai kepada batas iman kemudian ibadah, tidak, masih ada lagi peringkat berikutnya, muamalah, muasyarah dan juga akhlak. Hadirin maka Allah subhanahu wa ta'ala harus kita sempurnakan, dan ini harus terus menerus. Beliau katakan, kita biasa makan, apalagi di sana nih, kita makan kambing, maka tangan kita pun ada lemak-lemak, nggak cukup dengan diisi dengan air dingin, maka kita perlu panas, hangatkan itu air, mungkin cukup 5 derajat saja, kita bersihkan, ini hilang itu lemak. Tapi kalau kita mau minum teh, bikin teh susu, maka perlu dipanaskan lagi. Sekarang kita ingin masak daging lagi, maka dibakar lagi, dipanaskan lagi yang lebih kuat lagi, supaya itu daging jadi matang. Dokter operasi, dia alat-alat sudah digunakan operasi, maka banyak kuman-kuman, maka untuk menjaga, membersihkan itu alat-alat kedokteran tadi dari kuman-kuman diperlukan air yang sangat panas sampai 99,9 derajat supaya hilang itu kuman. Kalau cuma 5 saja, maka kuman pun akan bertahan. Begitulah hadirin perumpamaan kita ini. Kita bergerak keluar jalan Allah, mulai naik iman kita, ibadah kita mulai naik. Tapi kalau kita berhenti sampai di sana saja, apa yang terjadi? Hadirin Allah, beliau katakan, Nabi telah menjelaskan, orang sudah beriman, beribadah, tapi muamalah dia tidak benar. Muamalah dia tidak benar. Dia tidak panaskan lagi iman dia, enggak istiqamah dalam keluar jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang terjadi, Pak? Makanan yang haram masuk ke mulut dia. Maka semua ibadah dia dilemparkan ke muka dia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat yang dia kerjakan tadi, begitu semangatnya dia tahajud, maka dilipat seperti kain gombal, dilemparkan ke muka dia lagi. Kenapa? Karena dia sholat dengan makanan yang haram masuk tubuh dia, pakaian yang haram. Dia pergi haji, pergi umrah, bergantung di kelambu Ka'bah, menangis dan menangis. Allah katakan, wahai hambaku, tangisan kau tangiskan, silahkan menangis di depan Ka'bah, tapi uang yang kamu bawa untuk datang dari uang yang haram, pakaian yang haram. Jadi walaupun dia bergantung di kelambu Ka'bah, tangisan dia tidak akan diterima Allah, bahkan dilemparkan seperti kain gombal ke muka dia lagi. Utang tidak dibayar, walaupun dia mati sebagai seorang syahid tidak akan bisa masuk surga. Maka ini memerlukan lagi, panaskan lagi supaya muamalah saya jadi benar, sehingga akan menjaga ibadah kita dan iman kita pun akan senantiasa bertahan. मेरे दोस्तों और भाइयों, ये हमारी बहुत बुनियादी चीज़ है। मामलात का दीन अगर ज़िंदगी में नहीं आया तो हमारी तो सारी पूंजी जाएगी। मामलात के दीन से मुराद मैं जो कमा रहा हूँ, मेरी तिजारत, हर आदमी तिजारत जो करता है, मेरी बिजनेस शरीयत पर है या नहीं है, मेरी बिजनेस में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हराम हो जाती हो। यानी उस पर जितना ईमान अंदर में बढ़ता चला जाएगा, आदमी की निगाह मजबूत होती जाएगी, वो उसे जहर समझेगा। एक रुपया हराम का पेट में चला गया, वो उसे जहर समझेगा। जैसे दुनिया का इंसान, अगर किसी के बच्चे 3-4 दिन से भूखे हैं, कोई घर में खाना नहीं, बाप परेशान है, माँ परेशान है, बच्चे परेशान है, बच्चे एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, इस हाल में उसका बाप बाहर निकला, गांव था, बाहर कोने में देखा कि एक जगह गेहूं पड़े हुए हैं, वो उसे लिया उसने और ले करके चल के भागा कि जल्दी से बच्चों को खिला दो। वो वहां से चला तो रास्ते में एक आदमी मिला, ए भाई रुक जा,
वो एकदम समझ रहा है कि ये शायद चावल वाला है। तो कहा भाई मैं तो पड़े हुए लिए हैं, मैंने चोरी नहीं किए। भाई मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। वो घर आया, क्या है? देख ये चावल मेरे हैं, ये चावल मेरे हैं। मैंने इस चावल को चूंकि मुझे उगाना था, बोना जानते हो, बोना था, इसलिए मैंने उसमें दवाई मिलाई है, जहरीली दवाई है। वो बोते बोते इतने चावल बच गए थे, तो मैंने अपने नौकर से कहा था कि इसको दूर जा करके फेंक आइयो, मगर उस नादान ने यहाँ रास्ते में फेंक दिया है। ये मुझे तुझे इतना ही बताना है कि ये चावल जहरीले हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वो बाप 3 दिन के भूखे बच्चों को क्या ये चावल खिलाएगा? कभी नहीं खिलाएगा, कभी नहीं। इसलिए कि वो जानता है ये चावल बच्चों के पेट में जाते ही जहर है, बच्चे मरेंगे। उसको जितना यकीन है, उससे ज़्यादा मेहनत करने के नतीजे में हराम माल से बचना। आखिर इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु है, इनके मुंह में एक खजूर डाल दी। अल्लाह के नबी को ये शक हुआ कि शायद ये सदका की हो, कभी ये सदका की न हो। आपने उनके मुंह में डालकर, उंगली डालकर उस खजूर को निकाल करके बाहर फेंका है। सिद्दीक अकबर अपने गुलाम का एक खाना लेकर आया हुआ, 3 दिन का फाका है, उसने दिया, लुकमा खाया। लुकमा खाने के बाद मालूम हुआ कि ये हलाल का लुकमा नहीं है। सिद्दीक अकबर उसको उंगलियां डालकर कह करके निकाल रहे हैं। फिर कहा जा रहा है पानी पी पी कर निकाल रहे हैं। अब आप अंदाज लगाओ, 3 दिन का उस मैदे में कोई चीज़ गई न हो, एक लुकमा गया हो, उस एक लुकमे को निकालने में कितनी मुश्किल ही, लेकिन बराबर पानी पीते रहे, उंगलियां डाल करके निकालते रहे, यहाँ तक कि बड़ी मुश्किल से वो लुकमा निकला। लोगों ने कहा हजरत आप तो अपनी जान निकाल देते। फरमाया अगर ये मेरी जान के साथ निकलता तो भी मैं ये हराम लुकमे को निकालता, मेरी जान के साथ निकलता तो भी मैं हराम निकलता। मामलात, हमारा हर काम, हमारे घर में जो माल आ रहा है, जो रोज़ी आ रही है, अगर मेरे दोस्तों हलाल की है, बच्चों में इताअत लेकर आएगी, बच्चों में फरमान बरदारी लेकर आएगी, औरतों में हया लेकर आएगी, औरतों में शर्म लेकर के आएगी, औरतों में दीनदारी लेकर के आएगी। और अगर आने वाला माल हलाल का नहीं है, मेरी बात पूरा मजमा सुन लो मेरे दोस्तों, जहां हराम का माल पेट में जाता है, तकवे को उठाकर बाहर फेंकता है, तवक्कुल को उठाकर बाहर फेंकता है, हया और शर्म को उठाकर बाहर फेंकता है, जज्बात उनके नापाक हो जाते हैं। हज़रत मारूफ करखी का मकूला है, हज़रत मारूफ करखी का मकूला है, अगर हलाल माल तू खाएगा, तेरी नीयत नहीं होगी तो भी तेरे आज़ा और जवारे तुझे नेक काम करने पर मजबूर कर देंगे। और अगर तेरे पेट में हराम का लुकमा गया है, तू नहीं चाहेगा तेरे आज़ा और जवारे तुझे हराम कामों पर और हराम चीज़ों पर खड़ा कर देंगे। मामलात हमारी बुनियादी चीज़ है, मेहनत करके उन मामलात को ज़िंदगी में लाना। Beliau katakan hadir maka Allah dengan iman yang kita dapatkan saat kita keluar jalan Allah, ibadah pun mulai kita kerjakan, itu semua aset kita dikasihkan pahala-pahala yang besar, laba seperti dalam perdagangan. Tetapi hadir itu keuntungan pahala-pahala ibadah semua. Kalau ibadah kita tidak benar, maka itu akan hilang dari tangan kita saja. Capek orang kerja berdagang, untung banyak, tahu-tahunya hilang begitu saja. Apa hasil daripada kerja dia? Hadir maka Allah, muamalah yang tidak benar sehingga nanti akan menghabiskan pahala-pahala daripada ibadah-ibadah dia tersebut. Maka hendaklah kita betul-betul hati-hati hidup setelah kita memanaskan iman kita sehingga semangat untuk beribadah. Jangan cukup sampai di sana, panaskan lagi supaya muamalah kita pun betul. Maksudnya bagaimana? Kita tanyakan, belajar ilmu-ilmu. Saya sekarang berdagang, tanyakan muamalah dalam dagang yang benar bagaimana, syariahnya apa hukum-hukum agama yang berhubungan dengan perdagangan saya. Jangan sampai ada riba yang saya makan, jangan sampai ada culas dalam perdagangan. Begitu pula hadirin Allah, dia punya pertanian, apa hukum agama yang berhubungan dengan pertanian. Semua kita pelajari, belajar dan belajar, sehingga apa yang saya kerjakan dalam muamalah saya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Karena kalau tidak dijaga akan habis. Beliau katakan bagaimana perhatian Nabi kita Muhammad SAW kepada muamalah yang benar. Cucu yang dicinta, penghulu pemuda surga nanti. Tapi ada korma di mulut dia. Dan Nabi SAW ragu. Apa ini korma-korma zakat yang tidak halal buat keluarga Rasulullah SAW? Maka dikeluarkan dari mulut cucu yang dicinta, cucu yang disayang, sedang makan korma. Nabi masukkan jadi beliau, dikeluarkan itu korma. Kenapa? Nabi katakan kepada cucundanya, barangkali ini adalah korma zakat yang diserahkan, tidak halal bagi kita. Nabi takut untuk memasukkan, atau ada benda haram yang masuk ke perut cucunya tersebut. Nah, beliau katakan, hadirin Allah, makanan yang haramnya adalah racun. Begitu enaknya makanan tapi ada sedikit racun, maka akan membuat bahaya. Bahkan hadirin, satu orang miskin, dia sudah lapar 3 hari, anaknya merangkak pun susah, dia carikan makanan. Ternyata dia berjalan di sebuah persawahan, ada nasi di sawah sana, maka dia ambil. Cepat-cepat dia berlari untuk kembali untuk memberikan makan kepada anaknya yang kelaparan. Di pertengahan jalan ada orang lihat, saudara-saudara, sini dulu. Dia katakan, saya tidak mencuri, saya dapat di sini. Bukan, saya bukan menuduh kamu sebagai pencuri. Ini nasi atau beras tadi, milik saya. Dan dia katakan itu memang saya kasih racun di beras tadi atau nasi tadi. Untuk apa dikasih racun? Untuk memberikan makan kepada mungkin binatang-binatang tikus dan sebagainya. Dan sisanya ini masih ada. Saya suruh kepada pembantu saya untuk dibuang jauh-jauh, tapi dia malas, dia lemparkan ternyata di sawah di tempat ini. Kalau kamu makankan kepada anak kamu akan mati. Maka orang seperti ini hadir, walaupun anaknya sudah kelaparan 3 hari, tapi tahu ini racun, maka dia tidak akan mau memberikan makanan kepada anaknya tadi. Begitulah hadir, makanan yang haram yang masuk ke tubuh manusia itu racun. Beliau katakan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, begitu ketahuan beliau dalam keadaan lapar 3 hari, datang hamba sahaya dia, membawakan makanan. Begitu laparnya beliau makan langsung. Tapi setelah dijelaskan oleh hamba sahayanya, wahai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kamu nggak bertanya kepada saya dari mana sumber makanan tadi? Karena begitu laparnya beliau nggak sempat bertanya, langsung makan. Dari mana kau dapatkan? Saya ini tadi buat seperti dukun, menebak sesuatu. Dan ternyata benar, zaman jahiliyah. Dia akhirnya ketemu dengan mereka, dikasihkan ini uang hasil daripada kerjaan sebagai seorang dukun. Maka Abu Bakar As-Siddiq paham itu adalah haram. Langsung beliau usahakan keluarkan. Bahkan beliau katakan minum air sebanyak-banyaknya, sehingga itu pun lukma atau makanan yang sesuap tadi bisa dikeluarkan. Beliau katakan, hadirin Allah, kalau orang sedang kenyang, nanti mengeluarkan satu suap lagi itu mudah. Ini orang lapar 3 hari, maka itu makanan begitu cepatnya dicerna oleh perutnya tersebut, mengeluarkannya begitu susah. Bahkan orang bertanya, wahai Abu Bakar, kasihani diri kamu, masa untuk satu suap itu aja kamu harus memaksa diri kamu? Dia katakan, walaupun ruh saya keluar untuk bersama dengan keluarnya makan, saya rela. Ketakutan nanti benda yang haram. Lalu ada kan satu orang ulama, Syekh Ma'ruf Karfi rahmatullah alaih, dia katakan, hadirin Allah, sebelumnya tadi beliau katakan bahwasanya kenapa sekarang anak-anak kita jauh dari agama, begitu pula putri-putri kita nggak mau berpakaian, menutup orang, perbuatan sembarangan. Itu semua adalah pengaruh daripada makanan yang haram yang kita ambil, kerjaan yang haram diberikan kepada anak dan istri, maka itu semua akan mempengaruhi ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ulama dari Ma'ruf Karfi rahmatullah alaih, dia katakan setiap orang yang makan makanan yang halal, maka hadirin, sadar atau tidak, itu makanan yang halal tidak akan mendorong dia untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap makanan yang haram masuk ke mulut seseorang, sadar atau tidak, itu makanan yang haram akan membawa dia kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi untuk kita hadirin Allah, inilah kerjaan kita Pak dalam tabligh. Bukan selesai 4 bulan saya sudah sholat puasa, tidak. Harus kita lagi dan lagi kuatkan lagi iman kita sehingga membantu untuk membetulkan daripada muamalah dalam kehidupan. मेरे दोस्त और भाइयों, ये मामलात को यानी शरीयत पर लाना, इसके लिए उलमा इकराम से पूछना, उलमा से पूछ करके अपने घर का एक आने वाला पैसा मेरे घर में हलाल का है, ये कब होगा? जब मेहनत करके ईमान को उस डिग्री पर लाएंगे।
کہ جس سے عبادات کی لائن کا دین آسان ہوا، اب اور محنت کریں گے، معاملات کی لائن کا دین آسان ہوگا۔ اور چنانچہ جیسے صحابہ کرام کا ایمان بنا، جیسے صحابہ کرام کا ایمان بنا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک آیت نازل ہوئی اور سود کے منع کا حکم آ گیا، تو اللہ کے رسول نے جب اعلان فرمایا کہ میں سب سے پہلے میرے چچا کی سود کی رقم کو معاف کرتا ہوں، اور لوگ اپنے اپنی سود کے رقم کو معاف کر دیں، صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ اتنا ہی نہیں، حضرت عباس کو جب پتا چلا، حضرت عباس آئے اور آ کر کے حضرت عباس نے اعلان کیا کہ میرے بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سود والی رقم کو سودی رقم کو معاف کر دیا ہے، میں پورے سرمایہ کو معاف کرتا ہوں اور سب کو معاف کر رہا ہوں۔ 100% صحابہ کی زندگی میں معاملات صحیح ہوئے، ایک تجارت، ایک موقع، ایک جگہ ذرا بھی شک ہو ان کی زندگی میں یہ نہیں ہوتا تھا، حرام کا مال نہ آئے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی نے زمین بیچی، دوسرے صحابی نے خریدی، خریدنے والے صحابی نے جب اندر اپنا کام شروع کیا، اندر سے خزانہ نکلا۔ اب دیکھیے، خریدنے والے صحابی بیچنے والے صحابی کے پاس جا کر کہتے ہیں بھائی میں نے زمین خریدی ہے، یہ خزانہ میں نے خریدا نہیں ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ تمہارا ہے، لے جاؤ۔ بیچنے والے صحابی کہتے ہیں بھائی میں نے تو زمین اور زمین کے اندر میں جو کچھ تھا وہ سب بیچا تھا، مجھے کہاں پتا تھا اس میں خزانہ ہے، میں نے سب کچھ بیچا تھا، یہ میرا نہیں، یہ تمہارا ہے۔ اب یہ مسئلہ دونوں، وہ بھی لینے کے لیے تیار نہیں، یہ بھی لینے کے لیے، کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ہر ایک سمجھ رہا ہے غلط پیسہ اور غلط مال ہمارے گھر میں نہ آئے، حرام کا پیسہ نہ آئے۔ یہاں تک کہ یہ دونوں کا قاضی کے پاس مقدمہ گیا، اب قاضی کے لیے بھی بالکل نیا مقدمہ، وہ کہہ رہا ہے میری نہیں، وہ کہہ رہا ہے میں نہیں لینا چاہتا۔ اللہ نے ذہن میں بات ڈالی، ایک سے پوچھا تمہارا لڑکا ہے، کہے، دوسرے سے پوچھا تیری لڑکی ہے، کہے، ان کا یہ دونوں کی شادی کرا دو اور یہ مال ان کو دے دو۔ صحابہ قدم قدم پر ڈرتے تھے، بھوک برداشت ہوتی تھی۔ ہمیں اس دعوت کی مبارک محنت، میرے دوستو اس کو سمجھے ہم، اللہ مجھے بھی سمجھا دے، آپ کو بھی سمجھا دے، یہ محنت خالی چکر کا نام نہیں، چلوں پر چلے لگانا، 4 مہینے پر 4 مہینے لگانا، 5 اعمال کا کورس کر دینا، یہ نہیں ہے۔ اس محنت سے مطلوب جو ہے وہ دین زندگی میں لانا ہے۔ جیسے کھیتی کسان محنت کرتا ہے کھیت پر فصل کو لینے کے لیے، پانی دیتا ہے، کھاد دیتا ہے، لیکن کوئی کسان 2 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ 8 مہینہ اس میں پانی اور کھاد ہی دیتا رہے تو لوگ اس کو پاگل کہیں گے۔ فصل کے لیے کھیتی ہے، اب فصل لے، ان کا فصل نہیں لے رہی، وہ سب کہیں پاگل ہے۔ ایسے میرے دوستو اس محنت سے مجھے اور آپ کو بار بار اس کو کرنا ہے کہ میری زندگی میں پورا دین آ جائے۔ پورے دین کا پہلا باب عبادات ہے۔ عبادات میرے پاس کس درجے میں آئی ہے، کس طاقت کے ساتھ آئی ہے، اب مجھے محنت کر کے معاملات کی لائن کا دین لانا ہے۔ میرے گھر میں معاملات صحیح ہو، راستہ ان کا وہی قربانی کے ساتھ 4 مہینے لگا، ایمان کے حلقوں میں بیٹھ، انفرادی اجتماعی دعوت دے، اللہ کی بڑائی کو بول، ایمان کی ڈگری تیری اوپر ہوگی، معاملات کا دین اللہ آسان کریں گے۔ Beliau katakan hadirin yang dimuliakan Allah, perlu kita datang kepada alim ulama bertanya, apakah pekerjaan yang saya kerjakan ini sudah sesuai dengan perintah Allah, dengan cara Nabi SAW? Apakah uang yang saya dapatkan ini betul uang yang halal atau ada syubhat atau haram dalam uang yang saya miliki? Jadi bukan hanya kerja mencari uang dikasihkan pada makan pada anak dan istri, tidak, tapi tanyakan pada alim ulama, muamalah saya sudah benar atau belum? Dengan sistem dagang yang saya alami demikian betul, sudah betul atau tidak, sesuai dengan syariat atau tidak? Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mengarahkan ke sana perlu derajat daripada panasnya iman tadi ditingkatkan sebagaimana air tersebut. Lagi dan lagi korban lagi. Tambahkan lagi pengorbanan sehingga iman kita semakin meningkat. Sehingga tidak ada amal-amal kita yang tidak sesuai dengan muamalah yang diajarkan oleh agama. Maka tidak ada berhenti dalam usaha agama itu. Para sahabat radhiyallahu anhu memahami betul perkara ini. Maka mereka berusaha untuk bertanya satu-satu daripada pekerjaan mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apakah yang diharamkan, dihalalkan?
Karena bila katakan tadi satu makanan yang haram saja, satu suap saja, itu akan mempengaruhi daripada ibadah dia. Hilang nanti ibadah dia. Begitu pula iman dia akan melemah. Bila katakan bagaimana orang dahulu perhatian dia hadirin kepada muamalah. Allahu Akbar. Nabi SAW telah menceritakan dalam hadis yang sahih, satu orang dia beli tanah, kemudian ketika dibangun menggali pondasi, ternyata ada pundi-pundi di sana, berisi banyak perhiasan. Maka dia sadar, saya kan cuma beli tanah saja, berarti ini milik saudara saya yang menjual tanah tadi. Dia datang, wahai saudara, saya kan akadnya beli tanah saja daripada kamu, ternyata ini ada pundi, berisi permen, ini milik kamu. Dan anehnya lagi yang menjual mengatakan, tidak, saya sudah niatkan jual tanah dengan isinya, berarti ini milik kamu. Allah. Bagaimana kehati-hatian orang dahulu hadirin. Karena dia takut, kalau ini saya makan kepada anak dan istri saya, berarti benda yang haram, akan menjerumus, akan membawa mereka ke dalam api neraka. Dan ini juga takut, ini bukan milik saya, dan saya sudah jual tanah ini semua. Dia takut. Akhirnya dua-duanya pergi ke mahkamah. Dan ternyata qadhinya juga, hakimnya juga orang yang bertakwa kepada Allah. Dia katakan, Allah berikan ilham kepada dia. Dia tanya, kamu punya anak? Ya punya putra. Kamu punya anak? Putri punya. Udah kawinkan dua-duanya dan dikasih hadiah buat mereka. Allah. Hadir Allah Subhanahu wa taala. Ini muamalah yang benar. Sehingga masing-masing merasa dia tidak berhak. Bukan mau mengambil, tidak. Allahu Akbar. Jadi iman kita tidak hanya bertahan kepada degree, kepada derajat yang sudah ada, tapi tingkatkan lagi sampai betul-betul setiap pekerjaan saya sesuai dengan syariah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. मेरे भाइयों, इस मेहनत के जरिए से आज अल्लाह का शुक्र है उम्मत में ये मिसालें बन रही हैं। ये नहीं कि इस मेहनत से एक तबका हर जगह तैयार हो रहा है कि अपने कारोबार और अपनी हर चीज़ को इस्लाम और शरीयत के मुताबिक करूं। इसके लिए हम देख रहे हैं अब इंग्लैंड से, अफ्रीका से, अमेरिका और कनाडा से ये मिसालें मेरे सामने हैं कि वहाँ से एक आदमी सफ़र करता है, कोई मकसद नहीं उसका, सीधा दिल्ली उतरता है और दिल्ली उतर करके गाड़ी लेकर दारुल देवबंद जाता है, अपनी पूरी तिजारत के मसाइल रखता है, उन मसाइल का जवाब लेता है, वहाँ से सीधा दिल्ली और दिल्ली से अपने मुल्क। इतना दूर आता है। ये कब आया मेरे दोस्तों? जब ईमान की मेहनत होगी, इबादत की लाइन का दीन जिंदा होगा। तो जैसे हम इबादत के मसाइल पूछते हैं उलमा से, साहब मेरा रुकू में ये हुआ, मेरी नमाज हो गई, मेरा सजदे में ये हुआ, मेरी नमाज हो गई, मैं इस तरीके से देर से आया, मेरी नमाज हो गई, मेरे कपड़े का ये हाल है, मेरी नमाज हो गई। जैसे हम इबादत की लाइन पूछते हैं, इससे ज़्यादा हम मामलात की लाइन का दीन है। जब इसकी अहमियत आएगी तो मेरे दोस्तों मामलात की एक एक चीज़ पर निगाह होगी। फिर आदमी मेहनत करेगा, अगली मेहनत, अब इतने पावर से मामलात की लाइन का दीन तो जिंदा होगा। माशरत, जिस पर इस्लाम कायम होगा, इस्लाम कायम होता है माशरत पर। माशरत जो है कि आदमी का घर में रहना, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, पड़ोसियों के साथ, महल्ले वालों के साथ, आने जाने वालों के साथ एक मुआशरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में कायम की थी। और उसमें हर एक दूसरे के हक को अदा करने वाला था, हर एक दूसरे को नफ़ा पहुँचाने वाला था। इस वो मुआशरत हमारी ज़िंदगी में सही हो जाए, ये हम आप मेहनत करके हमें लाना है। और मेहनत का तरीका वही है जो अब तक मेहनत करते करते हम आगे बढ़ रहे हैं। Beliau katakan tadi hadirin, para sahabat radhiyallahu anhum dibina oleh Nabi SAW dalam imaniyat, ibadah, juga muamalat yang benar. Sehingga yang tadi mereka juga bermuamalah dengan riba juga. Tapi ketika iman meningkat dan meningkat, maka datang ayat tentang mengharamkan riba. Dan Nabi ilankan bahwasanya aku telah injak riba itu di bawah kaki. Sudah diharamkan di Allah kecuali ribanya Abbas bin Abdul Muttalib. Hadirin Allah dimaafkan. Tapi ternyata pamannya Nabi SAW Abbas, begitu imannya kuat, datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, jangankan riba, keuntungannya, modal saya semua yang halal pun saya juga sedekahkan semuanya. Karena beliau takut-takut ada bercampur riba daripada modal yang dahulu tersebut. Itu kekuatan dan imannya para sahabat radhiyallahu anhu. Nah hadirnya melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ini kerja kita, Pak. Bagaimana perlu muamalah kita perbaiki.
Sebagaimana kita datang pada alim ulama menanyakan saya bagaimana cara saya mandi, bagaimana saya bersuci, berwudu, bagaimana cara salat yang benar, pakaian saya bagaimana. Soal kita tanyakan tentang ibadah kita. Sama dalam hal muamalah kita lagi datang kepada alim ulama bertanya, betul atau tidak muamalah saya ini, dagangan saya betul enggak, bagaimana saya menyawa dan sebagainya, tanyakan. Beliau katakan, alhamdulillah, saya lihat sendiri ketemu orang, dia tinggal di Inggris sana, di England sana. Setelah dia ikut dakwah dan dakwah, dia punya bisnis. Datang dari England, Inggris, datang ke New Delhi, kemudian langsung pergi kepada pesantren Deoband namanya, membawa catatan, menjumpai alim ulama, mufti-mufti di sana. Syekh, saya punya bisnis demikian, tolong kontrolkan halal atau tidak pekerjaan saya. Kemudian mendapatkan jawaban-jawaban dari ulama tadi, dia simpan, dia kembali ke New Delhi, kembali lagi ke Inggris sana, ke England sana. Pedagang muslim hadir untuk memperbaiki muamalah dia saja. Dia tidak merasa bangga dengan sudah 4 bulan, kemudian bangun masjid dan sebagainya, tapi muamalah tidak benar. Datang dia hadir dari England sana ke New Delhi, ke Deoband, ke pondok pesantren, menanyakan alim ulama. Begitulah yang kita inginkan hadir Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu daripada muamalah kita ini kita ingin perbaiki. Kemudian terus hangatkan lagi iman kita tadi. Teruskan ini kerja dakwah sampai hadir muasyarah kita juga akan benar. Kerja apa yang perbaiki muasyarah kita, itulah kerja kita sekarang ini. Dengan kita lagi-lagi keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala, bicara kebesaran Allah, supaya nanti kekuatan iman kita semakin panas, sehingga mendukung kita untuk memperbaiki muasyarah. Pergaulan suami istri, dengan tetangga, dengan jiran, anak dan keluarga, ini adalah muasyarah. Bahkan beliau katakan, hadirin, kalau tadi muamalah untuk menjaga diri kita, jangan sampai ada benda yang haram, ibadah kita hilang. Dan ini muasyarah justru untuk mengembangkan Islam lagi. Tersebarnya Islam kemana-mana, tegaknya Islam adalah dengan muasyarah yang benar. Maka kalau muasyarah umat Islam ini hadir sudah benar, nanti kita akan lihat orang berbondong-bondong untuk masuk ini agama. ये माशरा जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जो सिखाया था, जिसके ज़रिए से हर एक दूसरे का हक देने वाला नहीं, बल्कि अपने हक को माफ़ कर कर दे करके मज़ीद देने वाला, ऐसा माहौल बन गया था कि मदीना मुनव्वरा जो है वो माशरा फिर दुनिया में चला। आपको एक बात अर्ज़ कर दूँ, कितना माशरा बना होगा। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक सहाबी का मकान ख़रीदा 80,000 में, ख़रीद लिया, बात हो गई, रकम दे दी, उनकी जो घर की रकम 80,000 थी वो दे दी, और उन्होंने ये कहा कि मैं 2 दिन में इसको खाली करके आपको हवाले कर दूँगा। ठीक है, हर एक अपनी अपनी जगह पर। रात को ईशा की नमाज के बाद ख़रीदने वाले जो सहाबी, उसी महल्ले में उनका मकान था, वो आए तो देखा कि मोहल्ले के किसी घर से औरतों के रोने की आवाज़ आ रही। घर में गए, घर में जाकर के घर वालों से पूछा कि भाई क्या है, खैरियत है, मोहल्ले में क्या हुआ, कहीं से रोने की आवाज़ आ रही। कहाँ पर? उनका वहाँ पर। वो अंदर गए, जाकर के तहकीक करके आए। क्या है का मसला ये है कि वो घर वालों है साल से इस घर में रहते थे, अपनी किसी मजबूरी की वजह से घर बेच दिया है, तो इस घर को छोड़ना पड़ रहा है, तो उस पर बच्चे रो रहे। वो सहाबी जो ख़रीदने वाले थे, देखो इस्लामी माशरा किसे कहते हैं, दूसरे की तकलीफ में काम आना। ख़रीदने वाले सहाबी ने फ़ौरन आदमी भेजा, बेचने वाले सहाबी को बुलाया और बुला करके कहा कि भाई ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। तो वो बच्चे हैं, बहुत सालों से यहाँ रहते थे, मोहल्ला वल्ला दोस्त वगैरह सब थे, इसलिए रो रहे हैं, आप फिक्र न करें, 2 दिन में मकान खाली कर दो। फरमाया नहीं, ये मकान अब तुम्हारा है, ये मकान अब तुम्हारा है। वो बेचने वाले सहाबी घर गए, जाकर के 80,000 लेकर आए और आकर के कहा कि जब आपने मकान का सौदा मेरा फैसला कर दिया है, तो ये आपके 80,000 ले लीजिए। फरमाया ये 80,000 तो तुम्हारे मकान के मैंने दे दिए थे, ये मकान मेरा था, ये मकान भी मैंने तुम्हें हदिये में दे दिया, न मुझे 80,000 चाहिए, न मुझे मकान चाहिए। ये था वो माशरा कि मदीना मुनव्वरा में एक बच्चा यतीम होता था, एक बच्चे का बाप पड़ जाता था, तो उसका सहाबा में से जो मिलता उस बच्चे के सर पर हाथ रख रहा कि बेटा हम तेरे हैं। एक बीमार होता था, एक बीमार, पूरा मदीना उसकी तीमारदार होता था। ऐसा माहौल, ऐसा माशरा कायम किया गया था कि उस माशरे में हर एक हक वाले का हक दिया जा रहा था।
माँ का बेटे पर क्या हक है वो तो दुनिया जानती है, बेटे का माँ पर क्या हक है। आज हम अपनी औलाद के हक नहीं दे रहे, हमें मालूम है अच्छा नाम रखना, औलाद को दीन सिखाना, औलाद की तरबियत करना, ये औलाद का हक है बाप पर। अगर नहीं दिया तो क़यामत के दिन गिरेबान से औलाद पकड़ेगी। माल कम दिया है ये नहीं है, वो तो इसकी मुकद्दर का, मरने के वक्त में जो विरसा उसके पास में आ जाए वो उसका हक है। लेकिन दीन सिखाना, अपनी औलाद को कुरान हुक्म कर रहा है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ये अम्र का सीगा है, ये हम पर, इस औलाद का हम पर हक है। बीवी शादी करके लाए, उस बीवी का हक है हम पर, उसको हम दीन सिखाएं। हमारी बहनों का हम पर हक है, क्या माल नहीं, माल तो मुकद्दर का मिल जाएगा, इनको दीन सिखाना, दीनी तरबियत करना ये हमारा हक है। दीन जब आएगा माशरा कायम होगा, जब माशरा कायम होगा तो हर आदमी चैन से होगा, और दुनिया का जो इंसान भी इस माशरे को देखेगा वो इस ईमान में दाखिल होकर के इस माशरे का फर्द बन जाए। Maka Rasulullah SAW telah membentuk muasyarah yang benar, yang baik, yang benar di Madinah, dan diajarkan kepada para sahabat untuk bermuasyarah yang benar, sehingga suasana muasyarah Islamiyah yang benar di kota Madinah tersebar seluruh permukaan dunia ini. Jadi setiap orang yang datang ke kota Madinah melihat muasyarah yang benar, yang baik, pergaulan yang indah di kalangan para sahabat, mereka dalam waktu yang singkat masuk Islam. Bagaimana hadir muasyarahnya para sahabat satu sama lain? Bukan cuma mereka tahu istilahnya menunaikan kewajiban saja, bahkan mereka mau mengorbankan hak mereka, dia korbankan untuk orang lain. Mereka tidak menuntut hak, bahkan hak mereka pun bisa dikorbankan. Bukan sekedar memaafkan saja, bahkan berbuat baik kepada berbuat yang tidak baik kepada mereka. Beliau katakan satu orang sahabat, dia beli rumah, harganya 80.000 dirham. Setelah dibeli, bayar, maka kata pemilik rumah tadi, baik, nah, sudah selesai, tapi masih ada benda-benda di rumah saya, nanti insya Allah 2 hari akan datang, nah, kamu akan ambil rumah, saya akan kosongkan. Sudah selesai, masing-masing pulang. Kemudian malam hari, ini pembeli tadi dia berjalan di lorong-lorong kota Madinah, ternyata ada suara tangisan anak kecil, perempuan. Dia pikir dari mana tangisan, dia dekat, katanya itu rumah sebelah itu. Kenapa itu anak menangis? Itu anak menangis karena dia mendengar ayahnya akan pindah. Ini rumah sudah dijual, sedangkan itu anak kerasan tinggal di rumah tadi, dan mendengar ayahnya mau menjual rumah, dia menangis dan menangis karena akan pindah rumah. Kemudian hadir Allah Subhanahu wa taala, dia panggil penjual tadi ke rumah dia, saudara, anak kamu menangis kenapa? Dia katanya biasa anak kecil bermain-main dengan tetangga-tangga, dia pun menangis. Dia katakan, saudara, tidak. Ini uang apa? Dia katakan, saya tidak jadi apa, bahwasanya kamu tidak usah pindah rumah. Uang yang tadi sudah saya sudah beli ini rumah, saya hadiahkan lagi kepada kamu, saya berikan pada kamu. Kamu tetap tinggal, nggak usah pindah dari sini. Maka dia pun pulang ke rumah, dia ambil uang tadi oleh yang penjual. Dia datang ke rumah itu, sahabat, wahai saudara, rumah tidak jadi, kamu sudah kembalikan, nggak jadi dibeli. Sekarang ini uang saya kembalikan kepada kamu. Karena rumah tidak dikembalikan kepada dia, maka uang pun dikembalikan. Dia katakan, saudara, tidak. Itu rumah kan sudah milik saya. Saya hadiahkan kepada kamu. Ini uang adalah uang kamu juga. Kalau mau dikembalikan, saya hadiahkan kepada kamu juga. Itu hadir hebatnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nggak berdiam, mau menghadiahkan lagi itu uang. Begitu pula hadir Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan dari cerita berikutnya, kalau ada di Madinah satu anak yatim perempuan, yatim satu orang, tapi semua para sahabat pada letakkan memegang kepala itu anak yatim. Wahai anakku, aku adalah ayahmu. Jadi satu anak yatim, seluruh orang Madinah memikirkan itu anak. Satu orang sakit, maka semua memikirkan bagaimana kesembuhan itu orang. Begitulah muasyarah yang ditegakkan oleh Nabi SAW di kota Madinah. Dari muasyarah ini orang melihat berbondong-bondong untuk masuk agama Islam. Nah, inilah hadirin kerja dakwah kita ini. Bagaimana hari demi hari kita ingin, bukan sampai kita 4 bulan sudah selesai, saya sudah cek rumah dulu, tidak. Itu adalah sarana. Tujuannya adalah sebagaimana petani tadi beliau katakan, dia menyirami kebun dia, sirami kebun dia.
tumbuh, sirami terus. Orang bilang ini orang-orang gila. Wahai saudara, kamu nyiram kebun kamu ini sekarang berbuah, kapan panen? Saya nggak berhajat kepada panen. Yang penting saya siram terus. Ini berarti petani yang gila. Sama dakwah keluar terus keliling mana-mana ke negara jauh mana-mana, tapi ternyata Islam tidak disempurnakan. Itu seperti orang gila, pekebun yang jadi gila tadi. Mudah-mudahan jangan ada jadi orang gila, insyaallah, amin. मेरे दोस्तों और भाइयों, ये चारों चीज़ें जब ज़िंदगी में आ जाएगी, ईमानियात, इबादात, मामलात, माशरत, ये एक दरख्त तैयार हुआ, फिर उससे फल निकलेंगे, वो है अखलाक। ये अखलाक जब ईमान वाले की ज़िंदगी में आएंगे तो ये अखलाक कट्टर से कट्टर इंसानों के क़ुलूब को बदल देंगे और लोगों की ज़िंदगियों में ये दीन दाखिल होगा। दुनिया में तमाम अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम को अल्लाह जल शानहू ने जहाँ दावत की मेहनत दी, वहाँ अखलाक आला पैमाने के दिए। अखलाक के रास्ते से दीन दुनिया में आया। Jangan ada yang keluar, tahan kita, insyaallah. Kita hormati yang bayan, Pak. Tahan saja insyaallah. Sabar, jangan अखलाक जिंदगी में, इसलिए ये अखलाक आएंगे, ये पूरा दीन जिंदगी में आएगा। मेरे दोस्तों, ये मुतालबा है किसका? अल्लाह जल शानहू का, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फिस्सिल्म काफ़ा। इस पर अल्लाह का वादा जो मैंने अर्ज किया, वो कब्र की आग, वो कब्र के सांप, वो कब्र का पीसना, वो कब्र का धंसना, वो मैदान हशर की तकलीफें जो एक बड़ा बदन बना करके जहन्नम में डाला जाएगा, उन तमाम बड़े बड़े मसाइल से अल्लाह निजात देगा और इस दुनिया को अल्लाह खुशगवार बना देगा और दुनिया की ज़िंदगी खुशगवार होगी। इसके लिए इस दीन को ज़िंदगी में ला देने के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को यतीम नहीं छोड़ा। आप एक कीमिया देकर अपनी उम्मत को गए हैं। जिस दौर में भी, जिस ज़माने में भी, जैसे हालात में भी उम्मत दीन से दूर हो जाए, ये आमाल दावत है, ये मुबारक मेहनत है। इस मेहनत को लेकर के जो उठेगा, कैसा भी सख्त माहौल होगा, खुदा उसकी ज़िंदगी में दीन को दाखिल करेंगे और उसके ज़रिए से दुनिया में दीन को फैलाएंगे और खुदा अपने दीन को गलबा अता फरमाएंगे और दीन गालिब होना शुरू हो जाएगा। वो मुबारक मेहनत मेरे दोस्तों, ये अल्लाह के रास्ते की नक्ल हरकत है। इसे किया जाएगा, जिंदगी में दीन आएगा। दीन का मुतालबा, सुन लो मेरे दोस्तों, दीन का मुतालबा हर ईमान वाले से है। हर ईमान वाले से पूछा जाएगा तेरी जिंदगी में दीन कितना है, और ये अल्लाह के सामने क़यामत के दिन हर एक से पूछा जाएगा क्या हाल है तेरा और तूने अपनी जिंदगी को क्या बनाया है। ये दीन का ज़िंदगी में लाना, चाहे हम मौलवी साहब हो, चाहे कारी साहब हो, चाहे हाजी साहब हो, चाहे मिनिस्टर साहब हो, चाहे वकील साहब हो, चाहे डॉक्टर साहब हो, चाहे सॉलिसिटर साहब हो, चाहे मास्टर साहब हो, और चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो, इसकी ज़िंदगी में कामयाबी के लिए दीन का ज़िंदगी में लाना उम्मत के हर फर्द पर फ़र्ज़ है। और हर एक को दीन लाने के लिए मेहनत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई है। इस मेहनत में इसे चलना होगा, इस मेहनत में अपने को बिठाना होगा, तालीम के हलकों में जमना होगा, अल्लाह की राह में निकलना होगा, इनफरादी इज्तिमाई दावत देनी होगी, ये दी जाएगी और अल्लाह से मांगा जाएगा। अल्लाह ने इस मेहनत में वो तासीर रखी है कि खुदा अफराद की ज़िंदगियों को बदलता है, कौमों की ज़िंदगियों को बदलता है, मुल्कों की ज़िंदगियों को बदलता है और पूरी मिल्लत के रुख को बदल देता है। ये मेहनत खाली बराए मेहनत नहीं है, इस मेहनत को किया इसलिए जाएगा ये 5 शोबे मेरी जिंदगी में आ जाए, इसके लिए मेरी जान, मेरा माल लगेगा। एक मकसद के लिए मैं मेहनत करूंगा, हमारा मकसद है पूरा दीन हम में आ जाए और हम इस दीन की दावत आलम के बसने वाले इंसानों को देंगे, मेहनत करेंगे, उनके हमदर्द बनेंगे कि उनकी जिंदगी में ये दीन आ जाए। इसके लिए मेरे भाइयों, पूरा मजमा इत्मीनान से बैठा रहो। हमारे जो साथी अल्लाह की राह में 4 महीने के इरादे कर चुके हैं, अल्लाह इनकी जानो माल में खूब बरकत नसीब फरमाए, इत्मीनान से बैठे। हमारे वो साथी जो चिल्ले का इरादा कर चुके हैं, हम उनसे भी कहते हैं नया जो मजमा ना भी चिल्ले 4 महीने का तय किया है, हम उनसे भी दरख्वास्त करते हैं सोचो, बराहे करम सोचो,
पलटो, सोचो और अपनी जिंदगी के मुतालिक फैसला करो। 4 महीने में ईमान अगर बन जाता है और इतना बड़ा दीन जिंदगी में आता है, इससे सस्ता सौदा कोई नहीं है। हिम्मत के साथ खड़े होकर के 4 महीने के अज़ाइम करो कि इंशाअल्लाह नकद यहाँ से 4 महीने जाना है। जिनके नाम पहले आ गए वो खड़े न हो, चिल्ले वाला 4 महीने के लिए तैयार हो तो वो खड़ा हो जाए। पूरा मजमा ऐसे ही बैठा रहो, अल्लाह से मांगते रहो, अल्लाह से मुतवज्जह रहो, अल्लाह दिल में दाखिल कर दे, खड़े होकर लिखा दो, वरना कम से कम पूरे मजमे में इस बैठने का और सुकून का जरिया बन जाओ। Masya Allah. Ini terakhir Pak, silakan angkat kepalanya lagi. Yang ngantuk-ngantuk tidur silakan. Bangun. Jadi hadirin beliau katakan, bagaimana nih dalam kerja kita di muasyarah kita demi hari demi hari kita tunaikan. Karena muasyarahnya bagaimana hubungan kita suami istri, anak, menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Bagaimana hak seorang ayah, hak seorang anak, hak istri, bagaimana di saat hari perkawinan, maka ada hak istri kita yang harus kita tunaikan. Kewajiban kita apa kepada dia tersebut? Kita terima dia bukan hanya untuk memberikan makanan, tapi berdirikan agama. Anak kita datang, hari ini kita tahunya menuntut hak. Ini anak saya durhaka, anak saya enggak taat kepada. Padahal ada kewajiban yang harus dinaikkan oleh orang tua kepada anaknya tersebut. Anak punya hak. Di antaranya Nabi SAW jelaskan bagaimana memilihkan ibu yang baik. Begitu pula mengajarkan Al-Quran kepada dia. Mengajarkan Al-Quran kepada itu anak, mengajarkan agama. Bukan sekedar memberikan makan dan minum, itu jelas. Tapi juga Allah katakan qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi anak kita punya hak yang harus kita tunaikan. Berikan nama yang baik kepada dia, ajarkan Al-Quran, berikan pendidikan yang benar. Begitu pula istri kita, bukan hanya dikasih makan, tapi kasih pendidikan agama. Semua jadi muasyarah ini mengajarkan kepada kita bagaimana menunaikan hak masing-masing orang tersebut. Dan hadirin yang dirahmati Allah, ini semua kita bina iman kita buat. Ibadah kita perbaiki, muamalah juga muasyarah sehingga terbentuk seperti pohon yang besar. Dan hasil daripada itu nanti dengan iman yang kuat, ibadah terus, muasyarah muamalah, nanti timbullah buah. Dan buah itu adalah akhlak. Jadi inti saat puncaknya daripada semua pengorbanan tadi adalah mewujudkan akhlak yang benar. Nah, kalau sudah akhlaknya orang beriman dari benar, baik, maka nanti kita orang melihat Islam itu indah, melihat Islam itu senang, sehingga mereka berbondong-bondong untuk masuk agama. Dan hari bukan itu saja, tadi permasalahan di kubur, masalah di akhirat, bagaimana sisa kubur, bagaimana pula nanti beratnya sisa di akhirat, orang dibesarkan badannya, giginya kayak gunung Uhud, bagaimana mukanya dan sebagainya, keperluan dia makan, minum, kepanasan, itu semua akan terselesaikan dengan kesempurnaan agama yang dia amalkan. Kalau muamalah ibadah dia, iman dia benar, ibadah pun benar, muamalah, muasyarah akhlak benar, maka hadirin dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kubur betul-betul menjadi taman surga. Di hari kiamat di bawah naungan arsy Allah, dan hari demi hari surga dia semakin ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin maka Allah, bagaimana supaya agama yang sempurna tadi kita dapatkan? Itulah usaha kita sekarang ini. Jadi agama menuntut daripada setiap umatnya itu untuk berkorban. Bagaimana bukan hanya sebagai agama, tapi untuk khulufis silmi kahafah, masuk Islam secara kahafah, secara sempurna. Dan itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Itulah usaha kita sekarang ini, Pak. Kita keluar 4 bulan lagi dan lagi, sebagai hari demi hari supaya agama yang sempurna saya dapatkan dalam kehidupan saya. Maka kita keluar 4 bulan jalan Allah. Berapapun uang yang kita gunakan, dalam 4 bulan itu terjadi perubahan sehingga iman kita meningkat, ibadah kita baik, nanti muasyarah muamalah akhlak jadi baik. Itu adalah benda yang kecil, murah sekali hadirin. Nah, hanya waktu 4 bulan uang kita gunakan, tapi untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat, maka itu murah sekali. Bahkan nyawa kita pun kita korbankan juga untuk mendapatkan agama sehingga kita selamat daripada api neraka. Ini adalah benda yang murah kita gunakan. Hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesusahan-kesusahan di akhirat tidak akan terselesaikan kecuali dengan agama yang kita amalkan. Kita memang bergerak tujuannya agama. Tambah lagi kita gerak tadi supaya agama sedikit mencapai kesempurnaan agama 5 tadi. Sehingga di dunia akan dimuliakan oleh Allah, membuka pintu hidayah buat orang lain, dan kita di akhirat dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau katakan di malam terakhir daripada pertemuan kita, kita ingin semua nih supaya terjun dalam usaha ini agama, sehingga agama disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita niatkan semua bagaimana saya buat usaha iman sehingga Islam secara kafah saya dapatkan. Bersedia teman-teman insyaallah. Bagi mereka yang sudah mendaftarkan 4 bulan, jangan bangun lagi, tetap duduk. Yang lain jangan berdiri sampai selesai majelis.
Kita minta malam hari ini bagi mereka yang belum mencatatkan namanya 4 bulan ataupun sudah mencatatkan nama 40 hari tapi ingin 4 bulan, maka silakan berdiri sekarang. Silakan bangun, Pak. Yang belum mencatat हिम्मत के saja. साथ उठो, अल्लाह जल शान जिंदगी बनाएंगे। Maka bangun dengan semangat, nanti Allah akan bentuk hidup kita ini. दीन आएगा मेरे दोस्तों, तो दीन जिंदगियों में बहारें लेकर आएगा। Jadi beliau katakan kalau sudah agama akan datang, maka nanti yang lain pun akan mengikuti, akan datang semua, keduniaan akan datang. और आखिरत बना देगा अल्लाह पाक। Dan di akhirat nanti akan dibentuk kehidupan kita oleh Allah dengan ada agama. इसलिए और अल्लाह की जात बड़ी है, अल्लाह ले जाएगा। हमारा काम है खड़े होकर के अपने आप का इरादा जाहिर करना, बाकी मसला अल्लाह आसान करता चला जाएगा। Allah Maha Besar, Maha Pemberi. Yang penting hamba tampakkan dirinya, ya Allah saya siap. Nanti Allah akan bawa dia kemana-mana. Silakan आए Pak, थे bangun. इज्तिमा के लिए, आए थे चिल्ले के लिए, हिम्मत से उठो, हिम्मत से बिस्मिल्लाह करो। Datangnya niat cuma hanya hadir istimewa saja atau hanya 40 hari saja. Sekarang kita jadikan 4 bulan. Bangun Pak, पहल saya करता है mengawal. इस मजमे में? Silakan, Masya Allah. 4 bulan. Yang belum ngasih nama. Alhamdulillah. 1. Sebentar dulu. Diri dulu. Yang lain lagi Pak. Yang di depan. Baris depan, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Tetap di tempat dulu Pak. Yang belum mencatat nama saja. Yang belum mencatat और nama. हिम्मत से उठो। Atau yang 40 hari jadi 4 bulan. Silakan. ये थोड़े पीछे करो, उनका आगे बुला लो। Mari ke depan Pak. Yang catat 4 bulan ke depan sini. Ke depan sini. आ जाओ, आगे आ Mari जाओ, ke दुआ depan ले लो sini. नकद। Tolong buka jalan. Buka di tengah nih, Pak. Itu bukan di tengah, Bapak agak ke belakang sedikit. Ini yang di depan Pak. हिम्मत Tolong ke belakang मर्दा, sedikit. मदद खुदा। Tolong kasih tempat. Ini yang agak ke belakang sedikit. Pak Imam, tolong minta kawan-kawan agak ke belakang sedikit. Silakan maju ke depan sini Pak. Yang 4 bulan siang maju ke depan. अल्लाह के लिए आगे बढ़ने वाले बनो। Jadi semata-mata karena Allah. Kita maju ke depan, Masya Allah. जो अल्लाह के वादे पर कदम उठाता है, अल्लाह उसका हाथ पकड़ लेते हैं। Buka jalan Pak. Jadi orang yang bangun janji, yakin dengan janji Allah, Allah akan tunaikan janjinya. Masya Allah. Tolong buka jalan Pak. Buka di tengah nih. Buka sedikit. Tolong ini mundur adik mundur sedikit deh. आ जाओ, हिम्मत से आ जाओ। Silakan ke depan sini, ke depan. Jangan ada yang moto Pak. Jangan ada yang moto. Silakan ke depan Pak. Berdiri. Jangan duduk dulu, berdiri dulu. Ke depan lagi sini, Pak. Ke depan lagi. से कहो वहाँ वो एक मजलिस में बैठा है, इतनी दीन की मजलिस में भी ये फोटो का हराम काम कर रहा है। Jadi beliau katakan ini majelis agama Pak, jangan ada yang memoto. Ini tidak baik. इस मजलिस में भी दीन की तौफीक न होगी, कहाँ जाएगा? Beliau katakan kalau kita dalam majelis agama tidak diberikan taufik mengamalkan agama, bagaimana tempat yang lain lagi? Silakan. Yang 4 bulan. बैठो। Silakan. और आओ हिम्मत से। Baru 5 Pak, yang lain lagi. Masya Allah. Silakan. Maju ke माशाअल्लाह। depan. कौन है जो अल्लाह से मामला करे? Alhamdulillah 6. Ke sini Pak ya. Silakan yang 4 bulan. Mari. इनसे कहो अभी कोई तश्कील नहीं करेगा, अभी खुद आप अपनी जात के मुतालिक सोचो कौन सी चीज हमें चाहिए। दीन चाहिए तो दीन की मेहनत पर हमें कदम उठाना होगा। Jadi beliau katakan ini masalah kita masing-masing, apa yang kita inginkan nih? Agama, usaha agama ini semua untuk kita, bukan untuk orang lain. अपने आप को समझाओ। Ini hendaklah kita pahamkan ini untuk saya sendiri, bukan untuk yang bayan, tidak. अल्लाह का वादा है, अल्लाह उस दीन की मदद करने वाले की खुदा मदद करेगा। Jadi janji Allah, in tansurullah yansurkum. Kalau kamu bantu agama Allah, Allah pasti bantu kamu. रोजाना सुबह सूरज तुलू होता है तो एक फरिश्ता कहता है अल्लाहुम्मा आते मुमसिकन खलफा, अल्लाहुम्मा आते मुनफिकन खलफा। दूसरा कहता है अल्लाहुम्मा आते मुमसिकन तलफा, ए अल्लाह तेरी राह में जो लगावे उसको और दे। दूसरा कहता है जो रोके उसके माल को बर्बाद कर। Nabi sabdakan setiap matahari terbit di pagi hari, maka bersama dengan terbitnya matahari 2 orang malaikat mendoa. Yang satu katakan Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah kepada orang yang suka berinfak kasih ganti dia. Yang kedua mendoa Allahumma ati mumsikan talafa, ya Allah kepada orang suka menyimpannya, nggak mau menyumbangkan, nggak mau berinfak, hancurkan hartanya. कौन है खरीदार? पहले से तैयार होने वाले तो बहुत थे, यहाँ आए हैं, बयान में आए हैं और कोई इरादा नहीं, नकद उठ रहे हैं। नकद उठने वाला नकद अल्लाह की मदद को देखता है। Siapa lagi Pak yang akan berinfak, maksudnya untuk berkorban untuk agama, cash untuk Allah Subhanahu. Yang tadinya ini hanya untuk datang istimewa saja, tapi langsung dia berangkat 4 bulan. Silakan bangun lagi Pak. Yang di depan lagi Masya Allah, yang depan, yang di tengah. Masya Allah, Alhamdulillah. Maju ke depan deh.
Langkah-langkah Anda mendekatkan diri Anda kepada Allah. Semoga dapat istri yang soleha, anak hafiz Quran semua, cucunya juga insyaallah. Yang alim. Silakan Pak. हर जगह से हर शादी अपने को Maju depan lagi, maju depan deh. Terus. Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan maju Pak. इस तरफ से भी आओ, ये मजमा भी सोचो, फैसले करो जिंदगी Terus depan sini. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang lain lagi Pak. Terus Pak. Saling tanyakan satu sama lain Pak. Masya Allah. Masya Allah. Yang lain lagi Pak. Masya Allah. 4 bulan. अच्छा इस पूरे मजमे से कहो, थोड़ा तर्जुमा करो। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने हमारा साथ दिया। Jadi beliau katakan Alhamdulillah Pak. Semoga Allah memberikan ganjaran pahala pada Bapak karena Bapak masih bersama dengan kami. आप माशाल्लाह अब तक इत्मीनान से बैठे। Sampai sekarang tuan-tuan masih tenang duduk dengan sabar. इसमें बहुत बड़ा मजमा हमारा वो है जो 4 महीने के लिए पहले नाम लिखा चुका है। Jadi Alhamdulillah sudah banyak kawan-kawan yang memberikan namanya 4 bulan. अब एक काम है, एक 10-15 मिनट का, तो आप हजरात क्या हमारा साथ देंगे? Beliau katakan kami minta lagi tambahan Pak 5 atau 10 menit. Bersedia untuk memberikan waktu pada kami 5 atau 10 menit? इंशाअल्लाह साथ दोगे? Siap untuk memberikan insyaallah. इंशाअल्लाह नहीं, ये आगे वाले नहीं, वो पीछे वालों से पूछो। Yang di belakang bagaimana Pak? Siap bertahan lagi Pak insyaallah memberikan waktu? Masya Allah. अरे तुम लोग दोगे साथ, ये पीछे वाले? Yang di belakang sana gimana Pak? Masya Allah. इंशाअल्लाह। अब एक काम करो, देखो ईमान का मुज़ाकरा ईमान वाले को नफा देता है। Beliau katakan Nabi telah sabdakan, wadzakir fa inna dzikratan lil mu'minin. Jadi berikan peringatan atau muzakarah tentang iman, itu akan memberikan manfaat kepada orang beriman. ईमान की बात आदमी करता है तो उससे उसके ईमान में कुव्वत आती है। Jadi kalau kita banyak muzakarah iman, sehingga nanti iman pun akan datang dalam diri kita, akan memberikan kekuatan untuk beramal. बहुत से साथी हमारे आते हैं जो ईमान की बात को सुन करके इरादा भी होता है कि मैं अल्लाह की राह में चला जाऊं, लेकिन इतने बड़े मजमे में उसकी हिम्मत नहीं होती और वो अपने इरादा उसका सड़ जाता है। Banyak kawan-kawan ini yang datang di sini hanya untuk istimewa saja, tapi mendengarkan bayan, semangat, ingin bergerak, tapi kadang-kadang dia ada rasa malu untuk berdiri di depan orang banyak. इसलिए मेरे दोस्तों, 5-5 आदमियों के यहाँ से लेकर आखिर तक हल्के बनाओ, एक दूसरे को तैयार करो 4 माह नकद के लिए। वो तैयार हो जाए, उसको हमारे पास भेज दो। एक 10-15 मिनट के लिए ज़रा इस अमल को पूरा मजमा एक साथ कर लो, एक साथ सब ईमान बोलोगे, अल्लाह की रहमत मुतवज्जह हो जाएगी। Maka kita minta Pak, dari depan sampai belakang, termasuk yang berdiri-diri juga Pak, buat 5 halaqah, semua kita bicara masalah kebesaran Allah, kebesaran iman, supaya iman kita semakin kuat, rahmat Allah pun akan Allah curahkan kepada kita. Sehingga muzakarah 5 tadi, nanti yang bersedia untuk 4 bulan kirimkan kemari. Sekarang dari depan sampai ke ujung sana, tolong buat halaqah 5 Pak.